ये लड़की है वो वजह। Then he says, ये लड़की है वो वजह. She is the reason, or you can say this girl is the reason. She is the reason, or you can say this girl is the reason. Hello everyone, welcome back to the channel. तो आप सबने दिलवाले मूवी तो देखी ही होगी और उसमें जितने भी फनी रोमांटिक डायलॉग्स हैं आपने वो भी सुने होंगे. But all those dialogues are in Hindi. So what are we going to do today? I'm going to translate, like I'll take some of the clips and I'm going to translate the dialogues in those clips in English. Alright, so without wasting time, let's start with the first clip I have and translate all the dialogues in English. Okay, so now let's see the first dialogue which we have. तू यहाँ क्या कर रहा है बे? और आप यहाँ क्या कर रहे हैं बे? तू यहाँ क्या कर रहा है बे? और आप यहाँ क्या कर रहे हैं बे? Alright, so the first dialogue we are having is तू यहाँ क्या कर रहा है बे और then दूसरा बोलता है कि तू यहाँ क्या कर रहा है. ठीक है, so इसको in English we'll say what are you doing here bro, and another one also says what are you doing here bro. ठीक है, so what are you doing here bro, what are you doing here bro. ठीक है, आगे देखते हैं. मैं अपने सिस्टर के बॉयफ्रेंड से मिलने आया हूँ. Okay, then he says, by the way मैं अपने सिस्टर के बॉयफ्रेंड से मिलने आया हूँ. By the way मैं अपने सिस्टर के बॉयफ्रेंड से मिलने आया हूँ. इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे by the way I came here to meet my sister's boyfriend. By the way I came here to meet my sister's boyfriend. मैं अपनी गर्लफ्रेंड के ब्रदर से मिलने आया हूँ. Then he says that मैं अपनी गर्लफ्रेंड के ब्रदर से मिलने आया हूँ. I came here to meet my girlfriend's brother. I came here to meet my girlfriend's brother. ठीक है? Let's just repeat it because I'm not writing. That is why I wanted you to do a lot of speaking practice. क्योंकि अगर मैं लिखूंगी उतनी ही देर में अगर हम बोलने की और अच्छे से प्रैक्टिस कर ले तो I think that let's do it in one step also. ठीक है? So तू यहाँ क्या कर रहा है बे? आप यहाँ क्या कर रहे हैं बे? मैं अपने सिस्टर के बॉयफ्रेंड. Okay, then he says तू यहाँ क्या कर रहा है बे. Then again जो दूसरे बोल दे तू यहाँ क्या कर रहा है. तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे कि what are you doing here, what are you doing here bro, and then another one says what are you doing here bro. Then he says by the way मैं अपने सिस्टर के बॉयफ्रेंड से मिलने आया हूँ. By the way I came here to meet my sister's boyfriend. By the way I came here to meet my sister's boyfriend. And then से मिलने आया हूँ. और मैं अपनी गर्लफ्रेंड के ब्रदर से मिलने आया हूँ. okay, and then he says and I came here to meet my sister, my girlfriend's brother. I came here to meet my girlfriend's brother. Okay, then they both say कहाँ है वो. Where is he, where is he. मिलवाओ ना. Introduce me. Where is he, introduce me. ठीक है, where is he, introduce me. Where is he, introduce me. यही तो है वो, वही तो है ये. Here he is, here he is. ठीक है, or you can say this is like you can just they are just introducing each other. He's the one, he's right there. You can also say in this manner. ही तो है वो, वही तो है ये. तू Then this is तू, तू. इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे you. ठीक है, then फिर आप दोनों एक दूसरे को पहले से ही. Okay, then this girl says लगता है आप एक दूसरे को पहले से ही जानते हो. लगता है आप एक दूसरे को पहले से ही जानते हो. इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे it seems like you both know each other already. It seems like you both know each other already. It seems like you both know each other already. Say it again. It seems like you both know each other already. It seems like you both know each other already. And then she says, Hannah को English में say, right? Right. It seems like you both know each other already, right? अरे बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं. In and out. Okay, then Veer says, अरे बहुत अच्छे से जानता है. In and out. Then इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे they know each other very well. They know each other very well from in and out. They know each other very well from in and
out. They know each other very well from in and out. ये जो आउट करता था ना, ये इन करते ये जो out करता था ना, ये in करते थे. Whatever he used to put out, he used to take it in. ठीक है, whatever he used to put out, he used to take in. Whatever he used to put out, he used to take in. क्यों? In and out? क्या कह रहे हो? Then she says, वीर तुम क्या कह रहे हो? वीर तुम क्या कह रहे हो को हम इंग्लिश में बोलेंगे. What are you even saying, वीर? What are you even saying, वीर? What are you even saying, वीर? ठीक है, तुम क्या कह रहे हो वीर? What are you even saying, वीर? सर मैं बताता हूँ, ये एक नंबर का डाउन मार्केट चोर और है. Okay, then he says, sister, मैं बताता हूँ, ये एक नंबर का डाउन मार्केट चोर है. इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे, sister, let me tell you, he is a low level market thief. He is a low level market thief. ठीक है, so sister, let me tell you, he is a low level market thief. Sister, let me tell you, he is a low level market thief. नामकूल चोर के जीवा, सीधे तुम चोर हो. Okay, after that she says, चोर, सिद्धू तुम चोर हो. And इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे thief. Thief, you can say a thief. सिद्धू, are you a thief? A thief, सिद्धू, are you a thief? तो तेरा भाई भी तो चोर है और चोर बाजार में दुकान है इसकी. सारा Okay, then he says, so. He says ना, तो इसको in English you can say, so, your brother is also a thief. He has a shop in the flea market. Flea market is चोर बाजार को in English we call flea market. FLEA, flea market. So your brother is also a thief. He even owns a shop in the flea market. So your brother is also a thief. He even owns a shop in the flea market. चोरी का माल यही तो खरीदता था. And then he says, मेरे चोरी का माल यही तो खरीदता था. He only used to buy my stolen materials. He used to buy my stolen materials, my stolen things, you can say. He used to only buy my stolen things. अरे गर्लफ्रेंड के भाई को छोड़, सामने तेरा भाई आराम से. Then Veer says, अरे गर्लफ्रेंड के भाई को छोड़, सामने तेरा भाई आ रहा है. Then it means that, oh, leave your girlfriend's brother. See, your brother is coming. Leave your girlfriend's brother. Your brother is coming. Then he says, बहुत हो गया इसका, बहुत हो गया इसका. जब भी मैं किसी को बोला बहुत हो गया तुम्हारा, बहुत हो गया इसका, तो we'll say that's enough of him. That's enough of him. ठीक है, बहुत हो गया इसका. That's enough of him. Okay. Then he says to हट जा वीर, तू इधर आ. Move aside वीर, move aside वीर. You come here. Move aside वीर. You come here. ये सिखाया था मैंने. Then he says, इधर आ यार, ये सिखाया था मैंने तुझे. You'll say, come here. This is what I taught you. This is what I taught you. अरे भूखा रखता था क्या मैं इसको? Did I not yeah. Did I not feed you properly? Did I not feed you properly? You come here. This is what I teach you. Did I not feed you properly? अरे भूखा रखता था क्या मैं इसको? और क्या वजह थी तूने चोरी की? Then he says, तो क्या वजह थी तूने चोरी की? Then what was the reason for your theft? Then what was the reason for your theft? Then this boy says, hey भैया ये लड़की. Bro, this girl. ये लड़की है वो वजह. Then he says, ये लड़की है वो वजह. She is the reason, or you can say this girl is the reason. She is the reason, or you can say this girl is the reason. Alright? यार ये देखना, ये फॉर्च्यून यहाँ पे रिफाइंड ऑयल क्या कर रहा है? दिखा? अरे ये रिफाइंड वाला फॉर्च्यून नहीं है. फॉर्च्यून का मतलब लक, किस्मत. रियली? यस. तुझे कैसे पता? क्योंकि मैं टी पॉइंट लैंग्वेज से इंग्लिश सीखती हूँ और अब तो इंग्लिश मेरे बाएं हाथ का खेल है. बाएं हाथ का खेल है?
और यहाँ मेरे से ढंग से एक्सक्यूज मी भी नहीं बोला जाता है। जब भी तुझे चाय वाले भैया से गिव मी 1 टी बोल के मुझे हंसी आ जाती है। हाँ यार, मैं क्या करूँ, फिर जॉब छोड़ दूँ? तो इसमें सोचना क्या है, इधर आ। देख यहाँ पे tpointlanguage.com सर्च करके तू कोई भी लैंग्वेज सीख सकती है। अपना नाम और नंबर रजिस्टर करो, एनरोलमेंट करा। ओह अमेजिंग यार, तो मतलब अब एक्सेंट भी होगा और कॉन्फिडेंस भी। एंड दैट टू इन 1 मंथ। ओह माय गॉड, तो मतलब अब मैं भी गिव मी अ कप ऑफ टी सही से बोल सकती हूँ। Yes, of course. फाइनली। So stop struggling एंड स्टार्ट स्पीकिंग। join T-Point English language course right now and speak like a pro. फॉलो फॉर मोर। So yes, we are done with the clip and I hope आपको सारे dialogue, सारे translations समझ में आए होंगे. And one more thing, see, whatever the dialogues you have learned from here, try to use them in your day-to-day conversation. Whenever you are talking with someone, with your friends or someone of your family, so just try to use any of the sentence you have learned from here, because these clips and these translations are only useful when you're really using them in your real life conversations, take in your day-to-day life conversations. So, and if you think that there is no one around us, there is not the environment to speak in English, so stand in front of the mirror and try practicing on your own. You don't need anyone to speak to do the practice. Okay? Or if you don't want to do this, just turn on your recorder in your phone and again try speaking. Okay? I just want you to try to speak. That is for the reason I'm making these clips. And that's it for the video and that's it for today. I hope आपको ये वीडियो समझ आई होगी. And अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो then please इसे like करना. And till then, subscribe our channel and stay tuned. Thank you for watching.